Hello students, this is my third lecture on linear programming. In the previous two lectures of linear programming, I have discussed questions of type where the region would have been bounded. Now, in this particular question, I would be discussing with you people the questions of type where the region would be unbounded and what are the extra steps that we need to do in such type of questions. But it is mandatory for you people you must have practiced the questions of bounded regions that I have discussed with you. Otherwise, आपके लिए समझना मुश्किल होगा, right? तो बेटर यही है कि आप पहले उन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें. Now, as I said, this is the question of type of unbounded region. इस क्वेश्चन में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है? I have already told you in the previous two lectures कि क्वेश्चंस जो इस टाइप के होते हैं उनमें 3 स्टेजेस होती हैं. इस क्वेश्चन में भी सिमिलरली 3 स्टेजेस होंगी. फर्स्ट 2 स्टेजेस तो वैसे ही चलेंगी जैसे उसमें चलती थी. सिमिलरली थर्ड स्टेज में भी ऑलमोस्ट वैसे ही स्टेप होते हैं, बट वहीं पर आके एक वेरिएशन होती है एंड वी वुड बी डिस्कसिंग व्हाट वेरिएशन वी हैव टू फॉलो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड अगेन वी नीड टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फॉर दिस टाइप ऑफ questions, I have taken an example from NCERT, exercise 12.2, question number 10. There are two types of fertilizers, F1 and F2. F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid. And F2 consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. After testing the soil conditions, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid. If F1 costs rupees 6 per kg, F2 costs rupees 5 per kg, determine how much of each type should be used so that the requirements are met at the minimum cost. Again, अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करें, स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो क्वेश्चन में क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. कौन कौन से? F1 एंड F2. दोनों फर्टिलाइजर्स में क्या है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड. F2 में भी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड की परसेंटेज कंपैरेटिवली डिफरेंट है जो F1 में थी. फिर उन्होंने क्या कहा है कि सॉइल कंडीशन को ऑब्जर्व करके हाउ मच नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड, राइट, फ्रॉम बोथ द फर्टिलाइजर दैट विल बी यूजिंग ओवर देयर. नाउ द क्वेश्चन इज फर्दर कॉस्टिंग मेंशन है. F1 की कॉस्ट 6 रुपीस, F2 की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीस. डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप शुड बी यूज्ड. इट मींस F1 फर्टिलाइजर की कितनी क्वांटिटी यूज करें, F2 की कितनी क्वांटिटी यूज करें, सो दैट रिक्वायरमेंट्स मीट करें हमारी जो भी नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड की है एट द मिनिमम कॉस्ट, राइट. अगेन क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट फर्टिलाइजर की कितनी क्वांटिटी लें और सेकंड फर्टिलाइजर की कितनी क्वांटिटी लें. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. लेट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर 1 एंड फर्टिलाइजर 2 आर x and y respectively, right? Again, as we have done in the previous question, quantities can never be negative. Therefore, x greater than equals to 0, y greater than equal to 0. We have discussed, right? So, ये तो हमेशा अपने inequalities create करनी ही होती हैं. Next, बाकी कैसे? उसके लिए पहले डाटा कॉपी कर लेते हैं. डाटा को अगर हम समझें, there are two types of fertilizers, F1 and F2. Nitrogen, phosphoric acid. First fertilizer, F1. 10% nitrogen and 6% phosphoric acid. F2, 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. Now, minimum requirement. Minimum requirements कितनी है नाइट्रोजन की? 14 kg. फॉस्फोरिक एसिड की भी कितनी है? 14 kg. हमने इनकी क्वांटिटी फर्स्ट फर्टिलाइजर और सेकंड की कितनी लेट की है? X and Y. और इनकी कॉस्टिंग भी लिख देते हैं यहाँ पर. कितनी थी कॉस्टिंग? F1 की 6 रुपीस पर केजी एंड F2 की ₹5 पर केजी. अगेन प्लीज ध्यान रखना बच्चे, क्वांटिटीज जो हमने ली हैं वो केजीज में ही ली है. F1 और F2 की क्वांटिटी X and Y केजी, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इनइक्वालिटीज क्रिएट करनी है. कैसे क्रिएट करनी है? जो कंस्ट्रेंट्स हैं. क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? फर्टिलाइजर्स में से नाइट्रोजन कितना मिलना चाहिए? मिनिमम 14 kg. नाउ इसको ऑब्जर्व करो. F1 फर्टिलाइजर की 1 यूनिट से 10% नाइट्रोजन होता है. हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टेकन ऑफ नाइट्रोजन? x kg. तो x kg से नाइट्रोजन कितना मिलेगा? इट वुड बी 10% ऑफ x.
सेम मैनर F2 फर्टिलाइजर से कितना परसेंट नाइट्रोजन है 5%, तो Y क्वांटिटी से कितना नाइट्रोजन मिलेगा 5% ऑफ Y। ये हुआ कि नाइट्रोजन that would be available to us. Now this nitrogen that would be available to us should be what? Minimum. It means it should be either greater than 14 or equal to 14. So अब इसकी सिंप्लीकेशन कर लेते हैं 10% of x that is 10x by 100 plus 5y by 100 is greater than equals to 14. On further simplification it is 10x plus 5y is greater than equals to 1400. If I take 5 as common from both of them, I have been left with 2x plus y greater than equal to 2x plus y is greater than equals to 280. This is next inequality जो हमने क्रिएट की। किससे क्रिएट की है? नाइट्रोजन से। क्या और कोई कंस्ट्रेंट्स हैं? बिल्कुल हैं। किस पे हैं? फॉस्फोरिक एसिड पे। तो उससे भी तो बनेगा। कैसे बनेगा? विद द सेम प्रोसीजर। फॉस्फोरिक एसिड को चेक करो। फॉस्फोरिक एसिड ओके यस x kg से कितना फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा 6% ऑफ x 10% ऑफ y। अगेन ये जो फॉस्फोरिक एसिड आया वो क्या होना चाहिए मिनिमम 14 यानी कि इट कुड बी 14 और मोर देन 14। तो अगेन इसकी कैलकुलेशन करें सो इट इज 6x by 100 plus 10y by 100 would be greater than equals to 14. Now please observe 100 को शिफ्ट करूंगा as well as 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो it would be what 3x plus 5y 14 से 2 कॉमन लिया that is 700. So this is our next inequality. क्या और कोई इनइक्वालिटी बन सकती है? सोचो कोई कंस्ट्रेंट है क्या? कंस्ट्रेंट नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड में था, इसके अलावा तो कंस्ट्रेंट ही नहीं है, तो कोई इनइक्वालिटी और नहीं बन सकती। सो क्या रह गया फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट करने के लिए z। z क्या होता था? वो फंक्शन जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी हमें? कॉस्ट। कॉस्ट शुड बी मिनिमम। सो व्हाट वुड बी अवर z? कॉस्ट, और इसको मिनिमम करना है। 1 kg की कॉस्ट है 6, तो x kg की कॉस्ट 6x फर्स्ट फर्टिलाइजर, राइट। सेकेंड फर्टिलाइजर की 1 kg की कॉस्ट है 5, क्वांटिटी कितनी है y, तो इट इज 6x प्लस 5y। सो ये क्या बन गया है हमारे पास z, जिसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी, राइट। सो दैट्स एंड अप विद अवर स्टेज नंबर 1। अब आते हैं स्टेज नंबर 2। क्या होता था उसमें? ग्राफ। सो लेट्स स्केच द ग्राफ। Again, I hope you must have observed from the previous 2 lectures, as in the statement type of questions, देखिए statement type of question actually represent applications. So the question what we have discussed are application of linear equation. So इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब because of these application based question, x and y are always quantities and quantities can never be negative. That's why x और y की negative side को मैं ज्यादा emphasize नहीं करता हूं। That is why जब आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकली जो सोल्यूशन निकालना है आप ग्राफ पेपर पे करेंगे, तो कभी भी कोशिश करें कि सेंटर पे ग्राफ मत बनाए, कॉर्नर पे ग्राफ बनाए, क्योंकि x और y नेगेटिव की इंफ्लुएंस करना ही नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप, x और y हमने लाइंस को प्लॉट करना है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती थी? y एक्सिस। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती थी? x एक्सिस। अब कौन सी लाइन रहेगी? ये क्रिएट करनी है। इट वुड बी 2x प्लस y इक्वल टू 280। एक तो सिमिलरली एक ये क्रिएट करनी है 3x प्लस 5y इक्वल टू 700। ऑब्वियसली लाइन बनाने के लिए पॉइंट्स जरा चेक कर लो। If I place x as 0, x 0 प्लेस किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 280, 1 पॉइंट मिल गया। If I place y as 0, y को 0 प्लेस कर रहा हूं तो 2x equals to 280, x equals to 140, 4 पॉइंट मिल गया। 2 points are sufficient for sketching a line, right? Similarly for over here, if I place
y as 0, x would be 700 divided by 3, which is, let's say approximation check कर लेते हैं इसकी, 3 to 6, 33.3 approximate value, right? Initially I placed y as 0, now I'm going to place x as 0. If I place x as 0, y would be 700 divided by 5. It is 140. So the second point for this line is 0, 140, right? Now, okay, after observing this, let's say sketch the line. For that, I'm taking points on x-axis and y-axis. Okay, let's say a little bit closer. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. Okay, 260. I think it would be sufficient. For y-axis, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. On y-axis I need 280. Okay, 220, 240, 60, 80. Okay, chaliye, let's get the lines. x0, y280. So this is the point. x140, y0. This is another point. I'm going to join these 2 points. This is the line. The line is 2x plus y equals to 280. Right? Another line. For that, x0, y140. Over here, x is 233.3. Let's say this is the point. 233.3. Y is 0. So I need to join these 2 points. So this is the line 3x plus 5y equals to 700. Right? I have sketched the lines. What should be the next step? Region, right? X greater than 0. X equal to 0. So x greater than 0 should be on the right hand side. Y greater than 0. Y greater than 0 would be on the upward side. Now, if I place origin over here, 0 plus 0, 0 greater than 280, false statement. Sorry, it is, yes, false statement. So it is away from origin. It is away from origin. Same manner, if I place over here, 0 plus 0, 0 greater than 700, false statement. So away from origin. Now as you can see, above x-axis, right side of y-axis represent first quadrant, and in the first quadrant region would be above these 2 lines also. So what would be the shaded region? Please observe this. This would be the required shaded region. Right? Now, next step. What was the next step? Actually, second stage has been finished. Second stage खत्म हो गई है ना? फिर क्या करते हैं? Third stage corner points. फर्क क्या होता है इसमें? Earlier it was bounded region, but this time it is unbounded region. But initial step same है यहाँ पे. क्या initial step थे?
कॉर्नर पॉइंट्स पे z की कैलकुलेशन, राइट? तो कॉर्नर पॉइंट्स, दीज आर द 3 कॉर्नर पॉइंट्स. इन कॉर्नर पॉइंट्स में मैं z की कैलकुलेशन करता हूं. पॉइंट्स एंड z. व्हाट इज z with us? It is 6x plus 5y. First point, let's say this is your point A, this is your point B, and this is your point, this point is your C. A, B, and C. A is x0, y20. And C is, what was C? C was this point. 700 by 3, 0. B point. How do we calculate B point? By solving these two equations. Why? Because B point is the intersection of these 2 points, so we can solve it, or otherwise we can go through graphically also. So the point B point comes out to be, this point is 100, 80. 100, 80. Okay. Now, what should be the next step? On these 2 points, on all these 3 points, what we need to go? We need to go for the calculation of z. If I place x as 0, 5 times of 280, कितना आएगा ये? 1400, 600 plus 400, 600 plus 400, that makes 1000. I hope I am correct. 6x plus 5y, yes it is 600. Yes, it is. Next, 6 into 700 by 3 plus 0. 3 to the 6, it is 1400. Okay, in this particular question, हमें क्या calculate करना था? The minimum value of z. Out of these 3 values, the minimum value of z is 1000, right? And it is at 100, 80. So fine enough. But इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था? ये तो बाउंड्री रीजन वाला ही क्वेश्चन चलता गया. अब यहीं पर आके आता है इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट. Point over here बच्चे कि in the case of unbounded region like this, I hope समझ में आ रहा है. Unbounded जहां पे चारों तरफ से क्लोज नहीं है, कुछ साइड पे बाउंड्रीज है, बट रेस्ट ऑफ द केसेस में बाउंड्रीज नहीं है, अनबाउंडेड रीजन. So in questions of such type where the region comes out to be unbounded, existence of minimum value of z and maximum value of z is not confirmed. मतलब क्या हुआ? बाउंडेड में तो हम कहते थे कि मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी और वो कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी. अनबाउंडेड रीजन में ये कंफर्मेशन ही नहीं होती हमें. सो बट अगर वो मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी वो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे, बट we need to make sure whether minimum or maximum value of z would exist or not. And how would we confirm it? For that, please अब इन points को ध्यान देना आप लोग. For that, if I need to calculate minimum value of z, I would sketch the region of z lesser than minimum value. And if I need to calculate maximum value of z, then I will sketch the region of z greater than maximum value. Now, what is small m, capital M, minimum and maximum? Z की values at the corner points. इनमें सबसे बड़ी वाली कौन सी है? 1400. So this is capital M, maximum value of Z, and 1000 is the minimum value of Z. तो मैंने क्या कहा? Unbounded region में कंफर्म करने के लिए कि मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, you need to sketch the region of this according to the question. कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम. आपको क्या करना है? मिनिमम. तो रीजन कौन सा स्केच करना पड़ेगा? z लेसर देन मिनिमम. इट मींस व्हाट वी आर गोइंग टू स्केच नाउ, z क्या है हमारे पास? 6x plus 5y लेसर देन मिनिमम. मिनिमम वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1000. उसका रीजन स्केच करना है. अगेन प्लीज हैव अ लुक ओवर देयर. यहां पे इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है. क्या डिफरेंसेस होते हैं? Whenever like over here इक्वालिटी गिवन है, इक्वालिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को, लीनियर इक्वालिटी.
और लीनियर इनइक्वालिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? रीजन को। दैट्स व्हाई जब हमने इसको स्केच किया तो हमने x इक्वल्स टू 0 यानी कि y एक्सिस को इंडिकेट किया, फिर x ग्रेटर देन 0 रीजन को रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा था। नाउ ओवर हियर लाइन तो रिप्रेजेंट ही नहीं करनी, बट रीजन रिप्रेजेंट करना है। बट ये भी क्लियर है बिना लाइन बनाए रीजन कैसे रिप्रेजेंट होगा। सो इट मींस व्हाट, ऐसे केसेस में क्या करते थे? लाइन डॉटेड बनाते थे। तो इट मींस लाइन तो बनानी है। कौन सी लाइन बनानी है? 6x plus 5y equals to 1000. And I'm pretty sure about this कि ये लाइन 100,80 से पास करेगी। क्यों करेगी? Because 6x plus 5y की वैल्यू 1000 100,80 पे तो आई है, तो एक वर्ड तो पता लग गया, that is 100,80. I mean समझाए the point also, right? Let's suppose this time x equals to 0 प्लेस कर देता हूं, तो y would be what? It is 200. So these are the 2 points. Let's sketch the line first. 100,80. This was the point. Now 0,200. X 0, Y 200. This is the another point. So line trace करेंगे. Dotted. This is the line 6x plus 5y equals to 1000. अब करना क्या था? इनइक्वालिटी यानी कि रीजन रिप्रेजेंट करना था। इसका कौन सा रीजन होगा? ओरिजिन प्लेस करो 0 + 0 लेसर देन 1000, टू स्टेटमेंट टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन से मतलब इसका रीजन क्या बन गया? अगर आप समझ रहे हैं तो दिस वुड बी द रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। वंस आई शेडेड द रीजन, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? स्टेप अब प्लीज अगेन ध्यान सुनिएगा। प्रीवियस शेडेड रीजन एंड न्यू शेडेड रीजन में अगर कोई कॉमन पॉइंट आ जाता, इस क्वेश्चन में बी पॉइंट कॉमन पॉइंट है? नहीं है। व्हाई इट इज सो? इन द प्रीवियस शेडेड रीजन बी पॉइंट वाज इंक्लूडेड, इन द न्यू शेडेड रीजन बी पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। व्हाई? बिकॉज इन दिस रीजन वी आर इंक्लूडेड दोज पॉइंट्स व्हिच आर ओवर हियर, मींस लाइन के इस साइड पे हैं। लाइन वाले पॉइंट्स तो हमने कंसीडर ही नहीं करने। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है, हम लाइन को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, लाइन के इस रीजन के पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। सो द प्रीवियस शेडेड रीजन एंड न्यू शेडेड रीजन डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, एंड इफ प्रीवियस एंड न्यू रीजन डू नॉट शेयर एनी कॉमन पॉइंट, देन इट मींस एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z वुड बी देयर, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी z की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो कौन से पॉइंट पे करेगी? बी पॉइंट पे करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो हम कह चुके हैं कि करना है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करना है इसमें। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है? तो मिनिमम z does exist at x equals to 100, y equals to 80, and minimum z is what? Minimum z कितना आएगा? 1000. So this is the answer of this question. Although answer is we have find out, but again the point has been left over here. क्या है important point? Unbounded region में सारे स्टेप वैसे ही करने हैं जैसे बाउंडेड में किए। इनइक्वालिटीज, रीजन शेड करना और फिर कैलकुलेशन करना कॉर्नर पॉइंट्स पे। बट इसके नेक्स्ट स्टेप इसमें एक्स्ट्रा क्या है? कंफर्म करना कि वेदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू z वुड एग्जिस्ट और नॉट। कैसे करना? उसके लिए स्टेप क्या बताए थे? अगर z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो z लेसर देन मिनिमम का रीजन शेड करेंगे, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो z ग्रेटर देन मैक्सिमम का रीजन शेड करेंगे। इफ प्रीवियस रीजन और न्यू शेडेड रीजन डू नॉट शेयर एनी कॉमन पॉइंट लाइक दिस ओवर हियर, अगर इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता है, देन वी डिक्लेयर यस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू z डज एग्जिस्ट, और वो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। बट इन एनी केस अगर कॉमन पॉइंट आ जाता तो हम क्या डिक्लेयर करते हैं कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू z एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस टाइप के क्वेश्चन में सपोज मान लेते हैं कि ये शेडेड रीजन ऊपर की तरफ होता है, जो न्यू शेडेड रीजन है, अगर ये नीचे की तरफ ना के ऊपर की तरफ होता तो दे वुड हैव अ कॉमन पॉइंट, बहुत सारे कॉमन पॉइंट। तो हम क्या डिक्लेयर करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो आई होप आपको ये अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन में स्पेशल स्टेप समझ में आए, राइट। सो
प्लीज प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अनबाउंडेड रीजन में क्या स्पेशल स्टेप्स है उन पे प्लीज ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए इसको। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस, मोर you learn. One more thing, if you're understanding my lectures, please subscribe my channel.